Good morning, everyone. Let's continue with theories of state feminism. And my topic is how do feminists define power? So, feminist scholars they show that power relations are organized on the basis of gender. फिर एक बार let's have a background of feminism, what feminism is. So far we have seen feminism is the advocacy of rights of women, advocacy of rights of women. So it means two things. First, women are not given rights, or even if they are given some, they believe those rights are not enough. So, first is the complete absence of right, and second is insufficiency of rights, which may be equated with gender inequality. So, ये दो dimension, दो factors हैं, दो platforms हैं upon which feminism it bases its demands. So, gender inequality dimension is that uh, the female gender it is not given equal amount of right, equal status is not there. Even if status is there, that status is not equal, which leads to unequal opportunities, unequal access to various resources and power. So this is the this is at the root of the demands of or the theory of existence of the theory of feminism. क्योंकि अगर जेंडर इनक्वालिटी नहीं होगी then there will not be any demand. If there is no demand, there will not be any mobilization. If there is no mobilization, there will not be support for this theory. So if this theory it is getting recognition world over, which means there is some truth to it. So the gender dimensions they are unequal. First thing. The second thing is this feminism it blames the presence of gender inequality on the social practice of patriarchy. So, according to them, this social practice has not kept itself up to the assigned domain. It has also encroached upon the political and economic domain. क्योंकि all in all, एक simple सी बात है. If those patriarchal rules, if those social customs, अगर वो वैसे ही हैं जैसे उनको एज्यूम किया हुआ है and but the customs if they are toothless or if they are uninfluencing they do not impact any other dimension especially the political and economic spheres अगर ऐसी सिचुएशन है then फिर पेट्रियार्की एग्जिस्ट कर सकती है वो कहीं भी एग्जिस्ट कर सकती है मेरा मोटिव है कि मैं आपको ये कंसेप्ट इसको उल्टा करके समझाना चाहता हूँ इन एन ऑब्वियस वे सो many people they question if patriarchy is really at the root of gender inequality. So उनका जवाब ये है if patriarchy is not affecting any other sector other than the social sector in which it took its form, अगर वो toothless है तो यानी वो किसी और स्पेयर को इम्पैक्ट नहीं करेगी. And if you any woman she has control over her purse and then she can stand politically in an independent way, she can earn her way in an independent way if economic backlash or economic obstacles are not there. अगर ये सब है और patriarchy सिर्फ एक it's like a formality, a fast kind of, अगर ऐसा कुछ है तो फिर patriarchy के जो जो जितने भी social custom है they will not be difficult to follow. जैसे अगर सिर्फ घूंघट रखना है, बड़ों को प्रणाम करना है एंड यू नीड टू अज्यूम द अथॉरिटी ऑफ मेल, ऐसा अगर है और बाकी दे आर फ्री टू परस्यू देयर ओन अपॉर्चुनिटी, दे आर फ्री टू परस्यू देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड एंटरप्राइजेज, पॉलिटिकली दे आर गिवन इक्वल राइट. अगर ऐसा सब कुछ होता तो पेट्रियार्की ब्लेम नहीं होती.
ये उल्टा करके समझा है. So while going through the obvious way, we found out that patriarchy it not only affect the social sector, but the political and economic sectors as well. So that's why this is an intrinsic practice which which in true form cause a big stopover over gender equality, a big roadblock in the way of achieving gender equality. क्योंकि जब तक ये चीज रहेगी, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंट्रोल इफ वो लोग मेल के पास रहेगा, then female will always keep looking for and keep moving for ensuring gender equality. ये दोनों डायमेंशन हो गए. फिर ये बात करते हैं कि what patriarchy is. क्यों this single practice has been blamed time and again for as the root of gender inequality. So patriarchy is made up of patr and archy. Patr, a Latin word for father, and archy means rule. So it's a father's rule, which later on take the form of male rule. So एक particular society में एक group में, whether personal group, family हो, social institutions हो, caste groups हो, उनमें the decision making power it rests on the shoulders of men or male gender. So decision जो ऐसे decisions कौन से हैं which affect people. So वही होता है the political and economic dimension या political and economic group के decisions ही तो हैं जो which hold real power. पैसा कहाँ से आना चाहिए, पैसा कितना जाना चाहिए, कहाँ पे खर्च होना चाहिए, किस किस जगह पे होना चाहिए, आप अर्न कर सकते कि नहीं कर सकते. तो वो सब वो दोनों दे both of these things they are controlled by man. So in a sense whoever controls the purse controlled everything. So decisions real decision उनके पास है. अब ऐसा है क्यों? क्योंकि इसका रीजन भी तो होना चाहिए कि पुराने टाइम से why is this practice still going on and from where is it really started. The reason is अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री देखें from the genesis of or from the arrival of Homo sapiens on the picture, so उस टाइम से 300,000 से लेकर अभी 20, 24, 25 AD तक, इस पूरे टाइम में the world it is replete with instances of violence. Violence is there because genetically we belong to animal kingdom, and then we hold many of characteristic, many features of a lawless society. Society है, but still we belong to the animal kingdom and we still hold those characteristics, hold those features. And one of these features is to get into dispute easily and resolve those disputes via violent way. So in that case, जो genetic एक और part देखते हैं, which is sexual dimorphism is there. Sexual dimorphism means the difference in the size and physical characteristic between the genders. Physical characteristic between the gender. So ये आप ना सिर्फ इंसानों में बल्कि आप you can see the cattle. अब यहाँ पे आप a cow and a bull इनके बीच में जो फिजिकल डिफरेंसेस हैं वो देख सकते हैं. अगर आप लायन की बात करें तो आप लायन एंड लायनस उनमें देख सकते हैं डिफरेंसेस. यही डिफरेंसेस जो हैं एनिमल किंगडम में दे आर प्रिविलेंट. एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन यही सेम जो है वो आप हमारे स्टॉक्स में, स्टॉक्स भी बिलोंग्स टू एप्स, उसमें भी देख सकते हैं. आप गोरिल्लाज के अंदर आप देख सकते हैं सिल्वर बैक, और उनके में जितने भी प्राइमेट्स हैं, प्राइमेट स्पीसीज में सब में आप यू कैन सी द डिफरेंसेस. गोरिल्ला में हो गया, चिम्स में देखिए आप, ओरंगुटैन में देखिए, तो you will see the glaring differences between size and the physique of different genders. और वही डिफरेंस होमो सेपियंस में भी है.
between physical prowess of man and woman. So ये जो difference है physical prowess में, this coupled with reproductive gestation time. Reproductive gestation time means एक बेबी के कंसीव होने से लेकर, मतलब एक जाइगोट फॉर्म, एक माइक्रोस्कोपिक फॉर्म से लेकर एक स्टेबल लाइफ तक, ये जो बीच का टाइम है, दिस इज टिपिकल ऑफ होमोसेपियंस एंड मैनी प्राइमेट स्पीसीज, कि एक बच्चे को कंसेप्शन से लेकर एक स्टेबल लाइफ तक एक लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है, जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव जेस्टेशन पीरियड. And this long period, it is often solely or independently contributed by women. वो कैसे? By women वो होता है because they need to carry the child in their womb. फिर they need to nurture the helpless child up to certain years, let's say 4-5 years. So ये कह सकते हैं कि होमोसेपियंस के जो बेबीज हैं, क्योंकि उसी के आसपास सारी कहानी है ना, फैमिली प्रोपेगेशन रिप्रोडक्शन यही है. तो ये जो 4-5 years हैं, लॉन्ग जेस्टेशन टाइम, इस टाइम पे वीमेन आर मोस्टली हेल्पलेस. हेल्पलेस तो नहीं कह सकते, बट इन नीड ऑफ हेल्प, इन नीड ऑफ लॉट ऑफ हेल्प. और पुराने टाइम में ये 4-5 साल जो है, जब तक वीमेन वर ऑक्यूपाइड विद this particular behavior, this particular activity, men were free biologically from this reproduction, actually carrying baby in their womb, and physical prowess भी था. So men acted as a defender in the ancient time, especially during the time when we were in animal and nomadic existence. फिर यही practice जो है, men acting as defenders and women looking after their children, this situation, this institution, it got petrified, क्योंकि this is the norm of nature. अब आदमी नहीं कैरी कर सकता चाइल्ड को in his यूट्रस है ही नहीं. एंड फिर this difference is natural biological difference. बट यस, ये कह सकते हैं कि उन 4-5 साल में मैन एंड वीमेन नीड ईच अदर द मोस्ट. बट उसके अलावा यही सिचुएशन जो है, this situation, it became customized, it became ritualized. और एक ritual हो गया कि men, they are there as defenders and the controller, the regulators, and women, they must follow their reproductive cycles. So in this way, patriarchy got established. Patriarchy, a biological rule, got established as a social rule. And फिर धीरे धीरे जो आपको बताया कि जितनी भी वॉर की हिस्ट्री आप देखें, है ना, अब आप अगर शुरू से भी शुरू करें अगर, तो 3000 BC विद मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जहाँ पे मेसोपोटामिया, असीरियन, सुमेरियन सिविलाइजेशन, फिर देन इंडस वैली सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, शैंग सिविलाइजेशन, ये सब भी थी, ये सब एग्जिस्ट कर रही थी. उस टाइम पे भी वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट तो थे, एंड रूल वही था, whoever can muster up enough muscle and mental power will win the game. So ये all शुरू से ही war and conflict were part of our life. और ऐसे में patriarchy was necessary at that time. But it is a sad story that it became a social custom, and then it started interfering in all the available dimension of a person's life. So that's why present time this theory is abhorrent. अब back to the chapter. So
According to feminists, the power relations they are organized on the basis of gender. ये आपको समझा दिया. Then the concept of power is given masculine traits, जो आपको बता देगी patriarchy में the time when all such living together, all such customs, when they started, the patriarchy was necessary because that was the need of time. And in those times of war and conflict, power was related to the masculine or to the gender of man. It was because उस time के लिए it was very necessary. So earlier, power was a masculine trait, but the sad story, it is still considered a male domain. क्योंकि आज के time में power dynamics they have changed a lot. Then power is constructed as possessing force and the ability to influence others. So feminists के according, power की definition anything that possesses the force, and this force it has the ability to influence others. So modern time में आप money को कह सकते हैं कि that money in whichever form it has a certain force and it can influence a lot of decisions, not only in social but political, regional, national, and even international level. So those without power, especially during conflict, are termed as impotent or wimps, and their weaknesses is associated with femininity. So ये एक और है stereotype. So again, one more factor that I forgot to mention is the stereotyping of the gender relations, which is not the case. ऐसा नहीं है अगर फीमेल जो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म की बात की, मैन is of 50 kg, so women will be around 35 kg. This difference of in the ratio of 15 kg. So हो सकता है ठीक है 50 के साथ 35 is no match, but 35 के साथ 35 match हो सकता है. And women they have time and again they have proved their uh, caliber in various fields. So again, stereotyping of weaknesses with femininity, it is also another factor that enhances or propagate the stereotypes of gender inequality. Then men are naturally associated with leadership and women are accepted as leader if they accept masculine notions of power. So according to feminism, men in these power dynamics, which infuse with the norms of patriarchy, men are assumed as born leaders, whereas women either they are confined to the reproductive arena, reproductive sphere, or if they want to be accepted as leader, they needed to accept the masculine notions of power. So what those masculine notions of power are? Let's have a look at them. Well, we cannot ignore feminism. It's just not because we need women, it's because women constitute 50% of the population and they are right up to some certain extent. And one more thing, if men cannot do without women, so the reverse is also true. The opposite is also true. Women cannot do anything about without men. So both need. My point is, feminism cannot be ignored because they not only constitute 50% of the population, but they need to understand this that it is the mutual help that that will take us ahead. Both of us, we need each other. So the masculine notions of power, they must be recognized, but they must be recognized along with the feminine notions of power, क्योंकि दोनों necessary है. So, but the masculine notions of power they cannot be ignored either. उसका रीजन ये है कि aggression is really an aggressive quality, aggressive and dangerous quality. क्योंकि if you are
If somebody in a dispute, let's say it's a dispute between two person A and B, and A is an impulsive and aggressive person, impulse and aggressive person, ऐसे केस में B must be careful about it because aggression, as I have said, is a dangerous quality. It's like a wildfire which you cannot control. और ऐसे में if one resort to violence or aggressive tactics, B, whoever composed or cool-minded he or she is, they must defend themselves. At least this is the least they can do. They need to be defend themselves in a violent or at least a combative way. So, in short, is if combat is there, you can employ a lot of defensive mechanism, लेकिन combat भी उनमें से एक है. So, combat का जवाब ultimately, अगर if you run out of all your mechanisms, combat need to be competed against another combat. Same way, defense जरूरी. डिफेंस के बाद अटैक आप अपने हिसाब से, those attack can take different forms, but in the terms of masculine notions of power, attacks are mostly violent. और violent attack, आपके पास दो ही रास्ते हैं. First, if you do not want to engage in, you can defend yourself, but you can also retaliate. आप beach violence में you cannot talk about diplomacy. So that's why डिप्लोमेसी जब तक चलती रहती है, वॉर तब भी चलता है. डिप्लोमेसी फेल हो गई तो भी वॉर चलता है. तो जैसे अभी रशिया यूक्रेन का चल रहा है, द वॉर इज रेजिंग ऑन, बट डिप्लोमेसी भी साथ साथ चल रही है. दे ट्राइंग टू डिफ्यूज द टेंशन, दे ट्राइंग टू फाइंड रिजॉल्व द डिस्प्यूट, फाइंड अ वे आउट. बट उसके अलावा यूक्रेन, इट इज ऑल्सो डिफेंडिंग एंड रिटेलिएटिंग अगेंस्ट द रशियन पावर्स. So that's another notion of masculine power. First one is that aggression will be there and it can take many form. Violence, it can take many form. Then you need to defend yourself, and if time permits, you need to retaliate. Ruthlessness in all its dealing. And fourth one is control. So these are the notions of masculine power. अब फेमिनिन नोशन इनके अलावा अलग हो सकते हैं. फेमिनिन नोशन, दे इनमें से कुछ है, दे ऑल्सो बिलीव इन ऑल these notions which are necessary according to the needs of time. बट उनके अलावा उनके जो notions हैं, most of them they can be clubbed into diplomacy and negotiations, mostly peaceful and democratic way, peaceful and democratic ways. और वो सही भी है. वही अपने अपने टाइम पे अपने हिसाब से ये चैनल भी और ये मेथड भी सही है. सो ऑल इन ऑल, अगेन, both the notions are right in themselves, and both the gender they need each other. फिर आगे बढ़ते हैं. The unequal struggle for power through history where man established control led to subordination of women because of their reproductive role. So ये आपको पेट्रियार्की की ब्रीफ हिस्ट्री, कि ये शुरू ही कहाँ से हुई, या जो जो अनइक्वल डायनामिक है पावर में, दे had the origin in the history when wars raged on, conflicts and skirmishes they raged on, and it led men to establish control, and women, because of their reproductive role, because of the long reproductive gestation time, they were subordinated. Then political theory and international relations give a central role to men and place women as a central actor within the state system. So एक अभी बात करते हैं जो IR का डिसिप्लिन है. इट इज recent discipline. It started after the First World War,
and whole the education, the written education, the technological breakthroughs, the effective channels of communication, dialogues, democracy, ये सब बहुत ही recent events हैं, and you can say most of them they can be dated in the last 200 years. So ऐसा नहीं कह सकते that all of these theories, although all of these efforts they have resulted in nothing, कुछ हुआ है, but ये भी है कि it's too early to say about the outcomes. All in all, feminism believe that the international relations they give a central role to men and a secondary role to women, and it's true. अगर आप statistics देखेंगे तो you will find that throughout the world women have not been given important places in important and prominent places even in the advanced and modern democracies. तो कुछ कुछ countries हैं जहाँ पे women they are controlling the affairs, but ऐसे ऐसे instances examples बहुत कम है. ज़्यादातर examples यही है, the number of women on in the higher echelons, the in the higher up the hierarchy, ये बहुत ही कम है. Then through history the very concept of male it is linked to notion of power, and feminists they challenge this notion in order to overcome it. So उनके according जो पूरी history में it is replete with instances where male is equated with power and female they are equated with weaknesses. Feminism they have challenged this notion because ये जो notion है man equal to power, it belongs to certain era or belongs to certain generation. Right now in the modern world यहाँ पे और भी कुछ power है, like just take the example of knowledge. Knowledge is a new power, knowledge is the new data, and यहाँ पे whoever has the knowledge, whoever has the know-how, has the technicalities, he or she is the king. आज के टाइम में especially whenever I equate money with power, so money भी कहीं कहाँ से आती है आज के टाइम में? In modern world it comes from knowledge. Whoever has the knowledge will acquire wealth and resources, and whoever acquire wealth and resources फिर वो अपने पास पावर रख सकता है. जिसके पास पैसा है वो अपने पास बहुत सारी सिक्योरिटी, Z plus सिक्योरिटी या उससे भी हायर सिक्योरिटी कैन मेंटेन. देन अकॉर्डिंग टू the feminism, masculinity it had become a base for those social institutions that were historically and culturally conditioned the patriarchal ideas about the world. तो इसको भी ज़्यादा इलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है. पैट्रियार्की में हमने देखा है कि जितने भी प्रेजेंट जो रूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस हैं, मॉडर्न रूल, मॉडर्न लॉ, ये सब उस टाइम के हैं जिस टाइम पे वायलेंस और यू कैन से एक्सपेंशनिज्म, colonialism, empires, bloody wars, ये सब they were redrawing the boundaries of the world. आज वॉर आज भी हम देख सकते हैं, violences are instance of violence are still there. So बट ये जो अब प्रेजेंट में जो रूल हैं ये उस वक्त के बने हुए हैं, एंड ये रूल है उस वक्त के जो पैट्रियार्कल स्टीरियोटाइप्स हैं उनके कारण. सो इट्स इट्स काइंड ऑफ अ फीडबैक लूप कि वायलेंस है, वायलेंस की वजह से मैन दे आर कंट्रोलिंग वीमेन, when they are controlling women they are equating them with weakness. So this is a patriarchal stereotype. That patriarchal stereotype they it got engulfed in the rule and law. That rule and law is still applicable. It's making men controlling all the resources. फिर again the stereotypes, then again the rule that strengthen the political control of men over women. So इस तरह से ये जो साइकिल है, एक फीडबैक लूप है, इसी के बारे में बात हो रही है.
then a socially constructed masculine experience is shown to be a universal experience and imposed on women and society as a whole. ये बहुत अच्छी चीज कही है that okay, सब कुछ accept किया जा रहा है that the world is prone to violence, that women they have certain biological duties which they can do. फिर उस जो reproductive gestation time है, they need the support of man and to be protected from another man who may resort to violence. They need someone who can combat or defend themselves in a violent way, in a combative way. So all in all, they are justifying the presence of man or the justifying the masculine notion of power, which is acceptable. Okay, but the world is not just a forgotten saga जिसमें जो men देखते हैं वही होता है. It's like, yes, violence is there, but sunrises is also there. Then, if conflicts are there, if competition and struggle is there, you can also see other experiences such as aesthetic values. अब aesthetic values भी बहुत ज़रूरी है. You you don't know what benefit you may acquire from following those values. So aesthetic it induces, but its role in inducing peace has been recognized. So aesthetics है, peace है, then there will be less violence. So ये भी अपने आप में ज़रूरी है. फिर बहुत सारी experiences होता है, recreations होता है, they also have whole important values. And then जो जितने भी dispute resolution के लिए practices है, which feminists emphasize, such as the democratic tradition of dialogue and deliberation. तो dialogue and deliberation भी तो है वहाँ पे, उनसे भी तो matters can be resolved. और ऐसा क्यों है कि हर बार the women वही जो आदमी दिखा रहे हैं, socially constructed masculine view of life. So why is there need to follow the masculine experience जब उनका खुद का भी experience है, so एक feminine experience भी है. So according to them, their objection is to equate the masculine experience as universal experience. So they are not looking through the eyes of men. They do not want to. So that's another objection, that such universal experience of man, such masculine experience should not be imposed on them. So this pervasive male privilege and reinforces social practice in private and public sphere. So this imposition of a universal masculine experience or universal masculine view of life on women, this creates a sphere of male privileges. And again फिर वो एक feedback loop हो जाता है कि yes, male privilege है, so this male privilege it give boost to patriarchy then bring forth the stereotypes. Those stereotypes they get petrified in form of rules and custom, and those are imposed on women. And फिर again same जो चक्की है, gender inequality, feminism, advocacy of rights, ये चलती रहती है. So it's another objection, and it's right up to certain extent. अगर मैस्कुलिन एक्सपीरियंस है तो फेमिनिन एक्सपीरियंस भी है, वो भी लाइफ को अपने तरीके से देखते हैं. फॉर अ बेटर लाइफ, फॉर अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी, वी कैन अराइव एट सम मिडिल वे कि जिसमें मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के जो एक्सपीरियंस हैं उनका जिस्ट, उनका क्रक्स एक कैन को एग्जिस्ट. सो दैट्स द आइडिया. फिर बात करते हैं द फेमिनिस्ट व्यू ऑफ द स्टेट. Feminists they argue that traditional theories of state are either descriptive, which deals only with characteristics like sovereignty, territory, power, or they deal primarily with their role as instrument of coercion and social cohesion. So this is about the traditional feminist theory, जिनके अकॉर्डिंग जो स्टेट का रोल था, it dealt with the higher elements such as who is going to sovereign where,
the territory, where are the boundaries of territories, how the power should manifest in domestic and international level or then they may deal with such power instrument which can uh, influence a stock of people in a certain direction. So यहाँ पे जो coercion and social cohesion है इसका मतलब ही यही है. The state has the power. Police है, and police it can maintain peace or it can at least coerce people, persuade people to behave in a certain way. जैसे सेक्शन 144 जब भी लागू होता है आईपीसी का, by which कर्फ्यू इज imposed. और कर्फ्यू लगने के बाद the 4 या उससे ज़्यादा लोगों की ग्रुपिंग जो है बड़ी ग्रुपिंग है, दे आर स्पेशली अवॉइडेड. सो ये भी एक सोशल कोहेजन या कोर्सन उसका इंस्ट्रूमेंट है. देन स्टेट हेल्थ रिसोर्सेज जो रेवेन्यू आता है, दे कैन दोज रेवेन्यू दे कैन बी चैनलाइज इन डेवलपमेंट एक्टिविटीज. सो एक विलेज है, द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ विलेज, अब उसके लिए जो फंड है वो स्टेट ने प्रोवाइड किया एंड सच फंड और उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, both of them they can uh, change the village overnight. So feminist का कहना है कि यस, स्टेट यही इन पॉलिटिकल या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव या गवर्नेंस अफेयर्स हैं उनके साथ ही उन तक ही लिमिटेड रखें. स्टेट अकॉर्डिंग टू फेमिनिस्ट आर पेट्रियार्कल इन स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट पेट्रियार्की. ये अनदर ऑब्जेक्शन है. फिर ऑल द पेट्रियार्कल प्रैक्टिस प्रीसीड स्टेट फॉर्मेशन, विच मीन्स स्टेट फॉर्मेशन जो है ये एम्पायर बिल्डिंग जो है बहुत लेट शुरू हुई है. लेट्स से यूरोप में तो इट स्टार्टेड आफ्टर द पीस ऑफ वेस्टफेलिया इन 1648. उससे पहले तो स्टेट थे नहीं, जो छोटे मोटे फ्यूडल एम्पायर्स थे, स्टेट थे, वैसल स्टेट्स थे. तो पीस ऑफ वेस्टफेलिया ये कह सकते हैं 17th सेंचुरी, द टाइम ऑफ द अराइवल ऑफ स्टेट. उससे पहले पेट्रियार्की तो बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रही, सिंस वी वर we belong to genus Homo, or we were hominoids even when in the deep past when we were primate species, just like orangutan, chimpanzees, gorilla. उस टाइम भी पेट्रियार्की थी. तो पेट्रियार्की बहुत टाइम से है. स्टेट्स बाद में आए. देन स्टेट बिकेम स्ट्रक्चर बिकॉज पेट्रियार्की and class system got institutionalized. ये एक अच्छी लाइन है. The institutionalization of the old practices of patriarchy and class, both of them they help in this formation of state. वो कैसे? अब state formation क्यों जरूरी है? Basis, especially to protect the territory, to govern the territory, or to govern the people who are living inside the territory, and then the relation with other territories. इसके लिए ज़रूरी होता है. सो पर्टिकुलर टेरिटरी, एक कंट्री, तो स्टेट बाउंड्रीज या स्टेट ज्योग्राफी उसको कंट्रोल करने के लिए एंड टू गवर्न इट एंड टू मेंटेन रिलेशन विद अदर कंट्रीज, इसके लिए स्टेट फॉर्मेशन ज़रूरी है. ये बट व्हाट आर द प्रिंसिपल अपॉन विच स्टेट आर फॉर्म? लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट. अब डेमोक्रेटिक स्टेट में ये है दैट whatever is good for people should be decided by people. Okay, fair enough. So yani to the state formation, first principle that people will be ruling themselves. They will be ruling themselves in form of democracy by direct election. जहाँ पे elections होंगे, जो representatives हैं, क्योंकि population ज़्यादा है तो representatives हैं, they will assemble in a platform known as parliament, and they will debate and negotiate, and that's how they will arrive at a conclusion. That's how rule and laws will be formed. ओके, ये समझ में आ गया. बट प्रॉब्लम यहीं से शुरू से ही है दैट व्हेन दे टॉक अबाउट पीपल दे टॉक अबाउट मैन. जो ओल्ड स्टीरियोटाइप पहले से ही है, पेट्रियार्की पहले से ही चल रही है, तो सब ठीक है, सारे इंस्ट्रूमेंट ठीक है, बट बिकॉज ऑफ दोज ओल्ड स्टीरियोटाइप, बिकॉज ऑफ द ट्रेडिशनल स्टीरियोटाइप्स, they forgot to include women in the people.
सो अब जब भी यहाँ आगे बात होती है कि पार्लियामेंट के अंदर लोग आएंगे, सो अगर पेट्रियार्की नॉर्म्स नहीं होते, इफ दे नॉर्म्स वर नॉट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, देन द सिचुएशन विल बी अराउंड 50-50, कंपोजिशन 50-50 होता है कि 50% मैन 50% वीमेन। बट ऐसा नहीं है, वीमेन बहुत कम है, मैन ज़्यादा है। बिकॉज ये कुछ लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि यस, वीमेन शुड बी देयर एंड वीमेन मस्ट बी देयर टू प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव व्यू। उनके हिसाब से what they are seeing is a custom which has its root in the deep past, यानी उनके ancestors इस प्रैक्टिस को फॉलो करते आ रहे हैं, सो हु दे आर टू ब्लेम इट। फिर इस कारण जितने भी नॉर्म्स हैं इंस्टीट्यूशनलाइज हो गए, वीमेन दे हैव बीन साइडलाइन और सबऑर्डिनेटेड। सो ये टोटल सेटअप है जिसके बारे में ये लाइन बात कर रही है। देन women lost their right to property and came to be termed as property. The individual household unit rendered women vulnerable to and dependent on father, brothers, husband. Again, ये फिर वही लेगेसी है कि पेट्रियार्की आखिर आई कैसे। सो विद टाइम स्टेट फॉर्मेशन 17th सेंचुरी 15th सेंचुरी जब से भी एम्पायर शुरू हुए तब से भी women they were sidelined, they were considered right to property, considered as a property in themselves, and they became vulnerable and controlled by the male authority. This weakened their access to countervailing power and support from larger kinship network. And inheritance, sexuality, reproduction were also regulated by state. For instance, adultery by women became a crime against the state and was publicly punishable. अब ये देखते हैं। फिर जो ये नॉर्म शुरू से ही चल रहा है टू कंसिडर वीमेन एज अ वीक सेक्स और टू इक्वेट वीमेन विद वीकनेस, तो ये नॉर्म पहले से ही है। एंड ये तो अभी इनको क्वेश्चन करना शुरू किया है, बट अर्लियर दे वर टेकन फॉर ग्रांटेड, क्योंकि हर कोई ऐसा ही मान रहा था। इवन वीमेन बिलीव दैट they are born weak and they must be dependent on the male authority. This the dependence on male authority, it weakened their access to all the countervailing power, their access to resources, their access to reach up the hierarchy of power, their access to various economic enterprises, their access to uh, various other activities, even recreation activities. So all in all, women they were confined to their domestic spheres, and उसके बाद भी inheritance, sexuality and reproduction, they were also regulated by the state. क्योंकि स्टेट वो जैसे आपको बताया कि पेट्रियार्कल स्टीरियोटाइप्स है, सो पावर इट इज बीइंग गिवन टू मैन। फिर मैन को पावर दी जा रही है, सो वो अपने पेट्रियार्कल स्टीरियोटाइप्स के कारण जेंडर अनइक्वल रूल ही बना रहे हैं। उन रूल के कारण फिर वीमेन आर सबऑर्डिनेटेड, अगेन वही सेम फीडबैक लूप है। तो उनको शुरू से ही वो एक्सेस नहीं मिला है, वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। फिर जब स्टेट ने रूल बनाए, मैन इफ द कंट्रोलिंग मैन बिकेम द फेस ऑफ स्टेट, तो फिर वो भी वैसे ही रूल बनाएंगे विच फर्दर कंस्ट्रेन द पावर ऑफ वीमेन। सो इसी तरह से इनहेरिटेंस की वीमेन को अथॉरिटी नहीं मिलनी चाहिए, वीमेन को जो है फादर की प्रॉपर्टी का शेयर नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज बेसिस उसके पीछे यही है कि अगर दिया जाएगा दे विल बिकम इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी तो दे विल बी आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ मैंस कंट्रोल। देन सेक्सुअलिटी भी वही एक पर्सनल डोमेन है ना, कौन किसके साथ किस तरह से बिहेव करता है, किसको कंसेप्शन, किसको अभी चिल्ड्रन प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग है वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जो सेक्सुअल प्रेफरेंसेस हैं और उसका एक्सप्रेशन है वो भी अलग है। ज़रूरी नहीं है कि सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो उसी तरह से हो जिस तरह से वो पोर्ट्रे की जाती है। सेक्सुअलिटी भी अपना एक इट्स लाइक अ स्टाइल, इट्स लाइक अनदर फेस, और वो भी इंडिविजुअल प्रेफरेंस पे होता है। रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअलिटी दोनों अलग अलग हैं। रिप्रोडक्शन इज डन टू कंसीव चाइल्ड, टू ब्रिंग फोर्थ अ चाइल्ड, वो एक फैमिली प्लानिंग थिंग है। वो भी उसमें भी डिसीजंस है, म्यूचुअल डिसीजन होना चाहिए। एज आई हैव सेड, मैन एंड वीमेन बोथ नीड ईच अदर। इट्स नॉट दैट कि वीमेन जो है मैन के बिना
हो सकता है। इट्स नॉट लाइक दैट। नेचर ने शुरू से ही जो ट्रांसमिशन ऑफ क्या बोल सकते हैं जीन्स या ट्रांसमिशन ऑफ लीनिएज है, वो इसी तरह से होगी। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसी के कारण ये दोनों जेंडर्स हैं। तो जो एक स्पीशीज जो है, पर्टिकुलर स्पीशीज विच इज रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली, उसमें नया ऑफस्प्रिंग तभी आएगा जब इट इंटीग्रेट्स द जीन ऑफ बोथ फादर एंड मदर। ऐसे में दोनों जेंडर से जीन्स आने चाहिए वाया द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, और मियोसिस से फिर ये जो जो गैमेट्स हैं उसके सेक्स सेल्स, स्पर्म एंड ओवा, ये मिलके एक जाइगोट बनाते हैं। सो यहाँ भी शेयर जो है दोनों का, मदर एंड फादर का है। अब यहाँ पे बात करते हैं सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक में कोई भी एक्टिविटी है, वह सोशल एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसमें इनके बीच में जो भी हो वो म्यूचुअल हो, एंड द पर्सनल स्पेयर इट शुड नॉट बी रेगुलेटेड बाय द स्टेट। लेकिन खैर, हम बात कर रहे हैं कि what are the allegations and objections of feminism are. Then women's role were confined to private sphere and men to public sphere. Then state gave legitimacy to this practice because of the concept that women were to be protected. ये आपको समझाया था। For this protection they had to give up their autonomy. Protection जो है women को चाहिए, वो आपको बताया reproductive gestation time, और उस प्रोटेक्शन के बदले विच शुड बी अ ड्यूटी ऑफ मैन, क्योंकि वही है कि अगर आदमी को भी बच्चा चाहिए तो फिर दोनों को प्रोटेक्ट करो। बट somehow this protection thing, it took a form of a condition in the form of giving up or the recusal of their autonomy, कि उनकी autonomy जो है वो now controlled by men. So this is another objection or then another allegation by the feminism. Then the state ensured the organization of power relation on gender basis. Feminism का कहना है the state has formalized gender power relations by retaining male domination as a state of top personnel. So ये भी true up to certain extent कि state की hierarchy में जो top positions हैं they are cornered by the members of male gender, and this is again has been highlighted by the feminism कि अगर हायर पावर जो है अगर मेल के हाथ में है तो इट्स मेल हु इज गोइंग टू डोमिनेट, और मेल डोमिनेट करेगा तो फिर वो रूल्स और लॉज वही ऐसे बनाएगा the application of power will be in that way that it ensures that male power retains and the female are subordinated. So ये एक objection है, and it has been taken account by various democracies की विमेन की जो हालत है वो सुधरेगी तभी। एंड फेमिनिज्म ऑल्सो, उनका भी जो मोबिलाइजेशन है वो इसी पे है कि अगर हायर हायरकी पे, हायर पोजीशन पे इफ यू इंक्लूड मोर वीमेन, देन उसके बाद उनके पास लेवरेज रहेगा, वीमेन के पास लेवरेज रहेगा जितने भी जेंडर डायमेंशंस हैं टू बी इनकॉर्पोरेट इन द होल डिक्शनरी ऑफ लॉ, क्योंकि लॉ ही है जिसके थ्रू वी आर resolving dispute, through which we are progressing, through which we are living out our lives, स्पेशली जहाँ भी सिविलाइजेशन है। तो वायलेंस भी एक लॉ का पार्ट है, और उसमें अगर जेंडर डायनामिक्स लाएंगे तो यस, मे बी we may come up with a different picture or different way of resolving the disputes. Then gender differentiation is evident in the presence of disproportionate number of men in coercive structure like army and army or police, and women visible in the service sector. ये भी एक statistical प्रूव डेटा है कि जो जितने भी हार्ड वर्क्स हैं, टफ वर्क, स्पेशली आर्मी पुलिस है, यहाँ पे मैन ज़्यादा है, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में मैन ज़्यादा है, और जितने भी सर्विस सेक्टर्स होते हैं लाइक टीचिंग हो गया, हाउस कीपिंग हो गया, जो क्या बोल सकते हैं इन हाउस प्रोफेशनल सर्विसेज होती है लाइक डॉक्टर हो गया है, रिसेप्शन सर्विसेज हो गए, बैक एंड हो गए, सॉफ्टवेयर सर्विसेज हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, क्लरिकल सपोर्ट हैं, ये सब मोस्टली यहाँ पे विमेन काम करती है।
तो ये भी तो म्यूचुअली एग्रीड हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि अगर वीमेन बिकॉज ऑफ the physical biological differences, if they are taking up the job, the in-house service sector job, उसका मतलब ये नहीं है कि वो वीक है। वो बायोलॉजिकल डिफरेंस है, वो अलग है और उसके लिए ये सर्विसेज ठीक है। बट मोस्ट जो नहीं चाहते हैं, अ, जो इन टफ में आना चाहते हैं, आर्मी, पुलिस में, एयरफोर्स में, मिलिट्री में, या किसी भी तरह की टफ एंड डेंजरस जॉब उसमें आना चाहते हैं, सो there should be opportunities there. So, in fact, women were supposedly protected from the tough professions. ये भी एक a form of protection कि tough professions में women को नहीं लिया जाए and exclude them and to prevent them from equal rights. So men are born eligible for better jobs and higher pay. Yes, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। टफ प्रोफेशन में वीमेन को नहीं लाया जाए, इट्स यू कैन से इट्स शो दैट मैन केयर अबाउट वीमेन। ओके, बट दोनों चीजें, फर्स्ट दे आर नॉट वीक एंड सेकंड इट्स नॉट दैट दे आर नॉट बिल्ट फॉर द टफ प्रोफेशंस। मे बी इट्स पर्सनल डिस्क्रिशन। अगर वो if they says हमें बच्चा नहीं करना है, हम you know we do not I do not want to marry but I want to serve in tough professions, so यहाँ पे फिर अपने वो जो reproductive rights हैं, she she put them on stake और उसके बाद she can enroll in tough professions, तो यहाँ पे उनको exclude ना किया जाए, क्योंकि ये कोई डिफरेंसेस है नहीं। फिजिकल डिफरेंसेस जो हैं वो सिर्फ कॉम्बैट में काम आ सकते हैं, कि है ना, आदमी और एक महिला के बीच में, मैन एंड वुमेन के बीच में अगर कॉम्बैट किया जाए तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के कारण उनके बीच में फिजिकल डिफरेंसेस हैं। बट उसके अलावा आजकल फिजिकली कॉम्बैट, हैंड टू हैंड कॉम्बैट कौन करता है? बट यही आप वेपन दें, उसके बाद आप देख लीजिए, है ना, हो सकता है कि we look up at new kind of new form of violence, वो भी नहीं पता हमें। सो प्रॉब्लम शुरू हुई कि टफ प्रोफेशन से एक्सक्लूड किया, यस, it it showed that you care, but to consider them weak and to exclude them from power, it shows that you are still reeling under patriarchal norms. So ये है patriarchal stereotypes men। और फिर फेमिनिज्म कहते हैं कि पेट्रियार्कल स्टीरियोटाइप के कारण ये समझा जाता है कि men are born eligible for better jobs and they should be given higher pay than women, which is unjust. And women, they have managed to wrest these privileges only after struggle and debates. But then writers like Spike Peterson and Zila Eisenstein, they have shown how the state mystified its patriarchal base by construction and manipulation of ideologies that sees the distinction between public and private life. Feminist writers like Sylvia Walby systematically deconstruct the state to show its patriarchal character and point to women's labor and reproduction as object of control by the state. अब इन दोनों को देखते हैं। द फर्स्ट राइटर लाइक स्पाइक पीटरसन, जीला आइजनस्टीन, इन्होंने कहा है कि स्टेट इट हैज मिस्टिफाइड इट्स patriarchal base. How? By construction and manipulation of ideology. Which ideology was manipulated? The ideology that see the distinction between public and private life. So here, state tried to encroach in the private life of people, because to control the sexuality, to control the economic enterprises, to control the access, and to control the autonomy of women, it's an interference in their private life. And this sees that have women don't have their lives. It's the life of men. Men have two lives: the public life, which is relegated to all the administrative and government and economic works, and private life between men and women is it about objectification of senses. So ये जो sensualization of private life है, this it escaped the individual fantasies and turned itself into realm of state. And state, by its very patriarchal nature, it held on to this distinction by creating a difference between man and women
that men are the public faces of a group known as men and women. Where writers like Sylvia Walby systematically deconstruct the state to show its patriarchal character and point to women's labor and reproduction as object of control by state. फिर यहाँ पे जो सिलिया वॉल्बी है उनके अकॉर्डिंग जो patriarchal character है it it has a bearing on the reproductive and private life of women क्योंकि patriarchy via state it will function only if there is something to be controlled क्योंकि अगर कुछ ऐसा एलिमेंट हो ही नहीं कंट्रोल करने के लिए so state can talk whatever it like state can make law in whichever field it like अगर वो कंट्रोलेबल ही नहीं है या इफ इट डजंट एग्जिस्ट तो स्टेट के लॉ के लिए लॉ का कोई मतलब ही नहीं है इन सिंपल अगर स्टेट आज एक लॉ बनाए कि रेड एलिफेंट जितने भी दिखे उनको उनको वहीं पे शूट कर दिया जाए एक लॉ बनाए लेकिन अगर रेड एलिफेंट है ही नहीं तो स्टेट के लॉ का मतलब ही नहीं इन द सेम वे अगर स्टेट कंट्रोल करना चाहता है विमेन को देन इट नीडेड सम स्ट्रिंग्स इट नीडेड सम nerve some tool some area and that tool is the women's reproductive life so women की reproductive life it is controlled by the state in various forms of patriarchal rule so जैसे inheritance हो गया divorce laws हो गए ठीक है फिर उसके बाद the employment accessibility हो गई economic accessibility हो गई ये सब जो है these are these instrument वो हम आगे पढ़ेंगे then the state has changed with time तो फेमिनिज्म ये भी कहता है कि स्टेट की हालत बदल रही है this changes are often in response to pressure from social movement like women's movement तो ये changes हैं जो ये women's movement के pressure की वजह से हैं sometimes change come from the democratization process and electoral pressures so for example pressure from mm, women's movement for equal inheritance right और रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट फॉर वीमेन ये दोनों मूवमेंट है दे आर पुटिंग प्रेशर और उसकी वजह से जैसे आपने देखा है कि जो लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वहाँ पे वीमेन को 33% रिजर्वेशन दिया है ठीक है वो भी इसी इन्हीं मूवमेंट्स की वजह से हैं और अब भी वीमेन आर सीकिंग some reservation or some rights to be included in the parliament और वो भी चल रही है और धीरे धीरे वक्त के साथ we don't know we may see many changes can also come from international pressure जैसे pressure from international organization on state to sign the convention on the elimination of discrimination against women so CEDAW it's a UN convention to eliminate all forms of violence against women और इस कन्वेंशन को साइन करने के बाद state it becomes liable to its provisions which specially protect women from all forms of exploitation so वो भी एक प्रेशर है जिसकी वजह से भी the state it is changing its tune but women feel still feel and face the patriarchal structure of state and society so this is it next topic mein we will talk about the feminist analysis of nationalism thank you very much kindly subscribe the channel